component of a vector is vector or scalar? Scalar. So this is x component, this one is y component. We cannot write ax plus ay equal to vector a. क्यों नहीं लिख सकते? Because दो scalar को add करके you will not get vector. So we need to convert these scalar into vector. उसके लिए किसका help लेना है? Unit vector. तो x axis के along unit vector क्या होता है? I cap. Y axis के along j cap. अब ये बताओ, अगर तुम ax को I cap से multiply कर दोगे, what will happen? If you multiply ax with I cap, scalar into vector, product is a vector. So suppose this is vector a1, ऐसा लिख दो. So draw this diagram first. Last class में हम लोग यहीं end किए थे. Ax into I cap is vector a1. What will be direction of this vector a1? Along I cap, that is positive x axis, and what length? Ax. So this is your vector a1. और यहाँ से यहाँ ये length कितना है? ax. That length is ax. And if you multiply ay with j cap, you get another vector or not? Say a2. किस तरफ होगा a2 vector? Along j cap, that is y axis. And what length? ay na? Ay. Length is ay. Now, can we add now vector a1 and vector a2? Yes. Now you are adding two vectors. कौन सा law use करोगे? Triangle law. a1 vector किस axis के along है? X axis. a2 vector किसके along है? So let us draw x and y axis first. And then using triangle law, vector a1, vector a2. This is vector a1 plus a2, isn't it? Check कर लो. ठीक है? Now, suppose this is triangle number 1, this is triangle number 2. Triangle 1 and triangle 2. कैसा triangle है दोनों? Any similarity between 1 and 2? They are similar triangle or congruent? कुछ देखो क्या है? Similar. How much is this side of triangle 1? Ax. How much is this side of a1 is equal to how much? Ax. What about this side? Ay. How much is this side? So what type of triangle are they? Congruent. Write that. Triangle 1 and triangle 2 are congruent. क्यों congruent हुआ? क्योंकि दोनों का side क्या है? Same और एक angle भी 90 डिग्री है. तो congruent है, इसका क्या मतलब हुआ? Third side is different or same?
So what can we say? ये angle or and this angle is different or same? Same. And what about this side? Same. दो vector equal कब होता है? Same magnitude and same. So vector a1 plus a2 and vector a, what are they? Different or same? So vector a1 plus vector a2 is equal to how much? Vector a. Vector a1 plus vector a2 is equal to vector a. That is, vector a is equal to, for a1 can you write ax I cap? ऐसा लिख सकते हो? Vector a is equal to ax I cap plus ay j cap. Because how much was a1? Ax I cap. How much is a2 equal to? Ay j cap. So vector a is equal to ax I cap plus ay j cap. So we started with दिस अप्रोच फॉर वेक्टर कि जब भी कोई वेक्टर से तुम डील करते हो तो क्या क्या बताना होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। और इसका क्या मतलब हुआ देखो, अगर तुम वेक्टर बताना चाहते हो तो क्या बता रहे हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इट्स एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट। फर्स्ट टर्म इज एक्स कॉम्पोनेंट एंड सेकेंड टर्म इज वाई कॉम्पोनेंट। सो दिस इज वन अप्रोच to represent a vector. क्या क्या बताना होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड सेकेंड अप्रोच इज इन टर्म्स ऑफ इट्स component, x component and y component, x component and y component. ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज अ वेक्टर कैन बी रिटन? टू। एक को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और सेकेंड कॉम्पोनेंट, सेकेंड इज कॉम्पोनेंट। तो ऐसा कंक्लूड कर लो। A vector can be written in two forms. There are two ways or two forms. One, magnitude direction. Second, component or components. So magnitude direction form and component form. Magnitude direction form and component form. Done? तो कैसे लिखते हैं वेक्टर को? या तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। और कंपोनेंट फॉर्म में हमेशा ऐसा लिखेंगे। तो एनी वेक्टर, एवरी वेक्टर, वी कैन डू दिस। जहाँ तक आई कैप और जे कैप का सवाल है वो तो फिक्स्ड है, तो केवल तुमको क्या चाहिए होगा इस दो स्पेस में, बताओ, एक्स कॉम्पोनेंट एंड, और लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हाउ टू फाइंड कॉम्पोनेंट एंड, आई मीन हाउ टू फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आइदर एक्स और वाई। सो इफ यू नो हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर, व्हाट कैन यू डू? You can write vector in what form? Component form. Now, how this component form will help us in adding, subtracting, we'll come to that in a moment. But पहले इस फॉर्म पे कुछ क्लैरिटी चाहिए। अब ये बताओ, ये जो सबस्क्रिप्ट है x and y, अभी क्या लगता है कि अच्छा ये सबस्क्रिप्ट x है तो कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, ये y है तो कौन सा कंपोनेंट है, y। लेकिन जब तुम सिंबल यूज करते हो तब तो सबस्क्रिप्ट अलाउड है। न्यूमेरिकल वैल्यू में हैव यू एवर यूज सबस्क्रिप्ट? टू सब एक्स का कोई मतलब है? वी नेवर यूज दैट। किसके साथ यूज करते हो, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट? सिंबल के साथ ना, वेरिएबल के साथ या सिंबल के साथ? सिंबल। कोई अगर वैल्यू है तब, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वी नेवर यूज सबस्क्रिप्ट। तो इंपॉर्टेंट ये सबस्क्रिप्ट है या आई कैप जे कैप? So coefficient of I cap will give you what? X component, and J cap का coefficient हमेशा क्या होगा? Y component. So never, this is not important. What is important? I cap and J cap.